what's up, welcome and welcome back to our YouTube channel. So today's video is going to be a tips for your class 10th board exams. I cannot really comment on the 12th boards because I'm still in grade 11th, but yes, 10th boards is something I have actually given. So I thought let's do this video because everyone might find it really helpful, because maximum of my audience who are watching me right now are in grade 9, 10th and you know all the student levels. So I thought it would be really helpful. So board exams is like round the corner and I'm sure like each and every student right now is super stressed out. Like I was stressed out too, so nothing to worry about that. But yes, I'm here to kind of burst your stress, like just break all the myths related to board exams and are they actually something really difficult or something, and how you can crack it even being an average student. So by an average student I mean like you're not doing that well in your class, but now you have a goal to study well and achieve above 90% in your class 10th boards, and I guess that's a goal for majorly everybody over here. So that's why I thought let's create this video, and yeah, let's quickly get started. Talking about my results, I had scored above 90%. You guys can see my detailed result on my video, I'll link it down below. So I had scored above 90%. I was honestly really shocked on how I scored 90% plus, because like in my term 1 in our year we had exams broken down into two parts, term 1 and term 2. So this was kind of an advantage for us, like in case we didn't score well in term 1 we can work hard and do better in term 2. So I guess that was my major point, because in term 1 I had scored 84% and that's quite an average mark for me. Like I don't know, it might be good for some people, but personally for me I felt that was a really average marking and I had to go up, like I had to touch 90 at least. Like that became my absolute goal. So I worked really hard. The first paper was MCQs, and I'll be very honest, my luck with MCQs is pathetic. Every time I think an answer I mark something else. So that's the reason I could not really score that well, and I can even blame my studies that I might have not prepared that well for my term 1 rather than my term 2. So you guys can see a huge jump, like from 84% to 90+% in term 2. So that's how I'm here. And now let's start with the major tips. I'm gonna give really practical tips which you can actually follow in that 1 month which is remaining. So yes, the first tip is the basic. Like any video you open on YouTube you'll get this tip, and that is read your NCERT line by line, because I have seen the question papers and literally they are from the NCERT. Like buying any other reference book has gone waste for me. I'll be very honest, मुझको नहीं लेना चाहिए थे reference books. Like NCERT is the key. If you have done NCERT line by line, every single example, every single corner of that textbook, you're done. You'll score above 90 in your boards, and that's how it is done. Like basically each and every question is from the NCERT. It might be twisted a bit like but each and every word in that book is really important, especially for English, math, like any subject you have chosen, it's gonna be really important. And for the secondary subject which I had chosen was Sanskrit. I didn't take Hindi. So for Sanskrit, you guys, there is no tip. You basically need to learn all the tables, and if you're done with the tables, you're done with Sanskrit. So I cannot really comment much about Sanskrit, but yeah, that's what it is. And honestly, what I felt about the 10th boards is that my 10th boards were easier than my school exams. Like my pre-boards were way difficult than my 10th boards. I don't know if the level was difficult or my preparation was better, but in short I felt like my boards were more chill than my school exams. So yes, the basic first tip is to complete your NCERT thoroughly, and then the next tip is also a very important one, and that is solving the question papers, the sample papers on the CBSE website itself. So CBSE basically offers you the question papers of that current exam year. So you can go on their website and then you have a section for the CBSE academic wala thingy, and there you'll get the sample papers. So instead of solving other har jagah se pehle, go on the CBSE website and वहाँ से sample paper solve करो. There are chances कि sample paper के questions भी paper में आते हैं. So that's also a very good thing. And actually the thing is कि sample paper में जिस accordance में the questions are given and the level of difficulty and the topics included on the question paper, it is actually the same as your board paper. So that's why I found sample papers very easy, and you know it was very good. Like if you're prepared well and you're done with your sample papers, you're gonna crack your board exams. So that's another tip. Solve the sample papers from the CBSE website, and then next you can go on for some books like books from Oswal. You can get R.D. Sharma and stuff for solving more papers, but
first all the CBSE ones because those are more important. And now let's go on to the next step, which is solving NCERT examples for maths. So if you're a math student, so if kya in 10th everybody has maths, you cannot really run away from it. There are many people जिनको maths का कोई लेना देना नहीं है, they don't like maths. I don't know what to say, but you need to score good in maths in 10th. You cannot really exclude it because अगर आपके यहाँ पे percentage अच्छे नहीं आए, things might go wrong in the future as well. भले ही future में आप जो भी subject ले रहे हो, but please work hard on your math in grade 10. So solve each and every example. Like एक तो index exercises होता है maths के, and there are examples जो हर topic के बाद 3, 4, 5 या 6 से examples रहते हैं. Solve each and every example because there are questions which have come from the examples of the NCERT as well. तो राउंड अबाउट सब यही होता है सारे टिप्स की NCERT का कोना कोना से छान मारना है. यू शुड नॉट लीव अ सिंगल वर्ड एंड इट्स नॉट इवन डिफिकल्ट, यू गाइस, इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग. 11th में आके देखो 10th कितना इंटरेस्टिंग था. सो येस, दैट इज द थिंग. एंड या द नेक्स्ट टिप इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, बट ये सब करने के बाद आती है ये टिप, एंड दैट इज सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स विथ योर टाइम बाउंडेशन. सो आई थिंक इस बार द पेपर इज ऑफ 3 hours. आई हैव नॉट रियली चेकड आउट द पेपर पैटर्न एंड द टाइमिंग, बट आई थिंक इट इज मेजरली ऑफ 3 hours itself. सो 3 hours का एक टाइमर लगाओ एंड उसमें एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. You have to do it because कई बार होता है you know the answer, you know everything very well, but then you go into the examination hall, सारा टाइम का कचरा हो जाता है and you are not able to solve your papers. I have seen a few of my friends, they are like toppers, वो बहुत अच्छा करते हैं studies में, but उनकी सब प्रॉब्लम क्या आई? टाइम बाउंडेशन, especially in literature papers like history. I take history as a literature paper, so please don't mind. History हो गया SST, and then फिर English हो गया. In those papers you have your last section इसमें सबसे ज़्यादा लिखना पड़ता है, and this time you have total theory papers. So that's why you need to take care of your time foundations and you need to set a goal कि आपको इतने questions इतने time में attempt करने, and that this might you might think that yes बहुत सारा fancy tips है, but नहीं, this actually does work. This is the thing which I had also done. हमारा भी कुछ ऐसा ही पेपर था. आई फील लाइक द थ्योरी पेपर्स आर द बेस्ट. दीज आर द पेपर्स वेर यू कैन शो केस योर टैलेंट. मतलब पूरा टैलेंट दिखा दो. इफ यू हैव ए लिटरेचर पेपर, कहानी लिख दो. डोंट थिंक कि CBSE वाले क्या सोचने वाले, क्या करने वाले. आई स्वेयर CBSE पीपल दे गिव मार्क्स फॉर एवरी सिंगल थिंग यू डू. सो इफ यू गाइज राइट स्टोरीज वेरी वेल, उनको पैराग्राफ्स में ब्रेक करो, ऐसे इंडेंटेशंस, अंडरलाइन, पूरा फैंसी फैंसी तामझाम कर दो, you might score good marks in that too. So those are the things जिसके लिए time foundation बहुत important होता है. Time manage करना is very very important. So let's move on to the next tip, which is underline the main keywords and answers. तो वही है, you should underline the main keywords. ये सारे actually बाद में आते हैं ये सब tips, but the major टिप हो चुका अभी. नाउ आई एम गोइंग ऑन टू द बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से. एंड देन वी हैव द पेपर लेआउट. सो समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट एंड लाइक वे डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल एग्जाम्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स इज द पेपर लेआउट. सो दिस वॉज समथिंग लाइक अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी व्हेन आई वेंट टू माई बोर्ड एग्जाम, दैट द पेपर्स आर नॉट लाइक दिस. जब हम स्कूल में एग्जाम लिखते हैं तो पेपर्स ऐसे होते हैं, राइट? बट व्हेन आई वेंट टू बोर्ड एग्जाम्स, पेपर्स ऐसे थे, लाइक दे वर लिटरली एक ड्राइंग बुक का पेज टाइप का. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट वो लिटरली ऐसे से चौड़े से पेपर्स होते हैं. एंड ऑनेस्टली उसमें लिखने में बड़ी दिक्कत होती है. लाइक इफ यू हैव अ हैबिट टू राइट लाइक दिस ना, ऐसे पेपर में लिखने में बहुत दिक्कत होती है. मतलब यू नीड टू फोकस. अच्छा हाँ, यहाँ तक लाइन खत्म करनी है इतना. तो एक बार ट्राई करो, इफ यू गाइज गेट इट फ्रॉम समवेयर, ऐसे पेपर वाले पेपर्स पे लिखो प्लीज, बिकॉज दैट इज समथिंग यू गेट इन योर बोर्ड एग्जाम्स. उसके बाद डोंट राइट ऑन द गिवन क्वेश्चन पेपर. हाँ, नेवर राइट ऑन योर क्वेश्चन पेपर बिकॉज CBSE हैज सोज बेसिक तामझाम वाला रूल. क्वेश्चन पेपर पे लिखा तो मतलब तुमने चीटिंग की है. सो इन केस, जस्ट इन केस यू हैव रफ वर्क, कुछ करना है, जो करना है सारा आंसर शीट पे निकाल दो. कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी करने की, बिकॉज अगर किया तो यू नो देयर आर सम खड़ूस एंड विजिलेटर्स जो तुम्हारे मार्क्स काट सकते, जो कुछ भी कर सकते बेसिकली. सो वो मत करना. एंड देन यूज राइट पैराग्राफ्स एंड यूज इंडेंटेशन. हाँ, तो इंग्लिश में व्हेन यू आर writing your long answers, it is very necessary to break your answers into paragraphs. I was really grateful that my teacher had taught me this, and ये actually I think CBSE का एक rule भी होता है. I'm not really sure about that, but when you're writing a 5 mark का answer या कोई भी story, you need to break it into paragraphs, like intro paragraph, then the main body into 2 paragraphs I think, and then conclusion का एक paragraph. And जब आप paragraphs में divide करते हो, you even need to put indentation. So indentation is basically
आपका मान लो दिस इज द मार्जिन, यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर ना, बट क्या करो इंडेंटेशन मतलब दिस इज योर मार्जिन, तो यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, द फर्स्ट लाइन यहाँ से चालू होता है फिर वापस आपकी मार्जिन से चालू होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन एंड दैट बेसिकली मेक्स द पेपर लुक मोर फैंसी एंड नीट, सो उससे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड नेक्स्ट टिप इज टू थरो रिविजन ऑफ योर फिगर ऑफ स्पीच. तो फिगर ऑफ स्पीच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. मतलब अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं, आई थिंक 2 से 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, बिकॉज देर आर एमसीक्यू क्वेश्चंस इन द पैराग्राफ्स पोम्स वाले जो सेक्शन होता है ना, फर्स्ट सेक्शन होता है गेस, तो उसमें यू गेट मार्क्स फॉर फिगर ऑफ स्पीच. वहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, तो मान लो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू डोंट click the figure of speech ना, तो you will regret it a lot because that is something you can just रट लो, मतलब you know the figure of speeches, right? So just do that and I think it really helps. And उसके बाद try learning only main points in SST. So this is a major roundabout tip for SST कि जो हिस्ट्री है ना, डोंट टेक इट एज कि ओ माय गॉड मुझे सब रटना है, ओ माय गॉड मुझे सब रटना है. नहीं, डोंट डू दैट. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय स्कूल एग्जाम्स, जिसकी वजह से आई कुड नॉट स्कोर रियली गुड इन माय स्कूल एग्जाम्स. बट बोर्ड एग्जाम्स में आई थॉट टू वर्क स्मार्ट एंड नॉट लर्न ईच एंड एवरी सिंगल लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. व्हाट आई डिड, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए. जैसे मान लो आई हैव अ टॉपिक, मैंने उसका सब टॉपिक लिया एंड उस सब टॉपिक को मैंने अपने ही लैंग्वेज में आई एक्सप्लेन इट टू माई सेल्फ कि व्हाट दैट होल एंटायर ब्रीफ मीन्स. सो दैट रियली हेल्प, स्पेशली हिस्ट्री में. मेरा हिस्ट्री के साथ अलग ही रिलेशन है, आई डू नॉट लाइक हिस्ट्री. तो ये मैंने ट्रिक था जो मैंने यूज़ किया. आई थिंक जिनको हिस्ट्री नहीं पसंद तुमको भी काफ़ी यूजफुल होगा ये. एंड देन मेक अ साइड मार्जिन फॉर रफ वर्क. हाँ, व्हेन यू हैव योर मैथ एग्जाम, साइड में एक रफ वर्क के लिए से लाइन बनाओ, वरना मोस्टली दे डू प्रोवाइड यू रफ शीट्स फॉर योर मैथ एग्जाम. बट हमारे साथ क्या हुआ था, दे provided it quite late or something, there was some sort of issue with the rough sheet. So make a margin, इस साइड पे एक स्केल से लाइन बना लो and do all the rough work that you do over here. भले MCQ क्यों ना हो, just do your rough work ताकि you at least have a proof that that is what you have solved and not others. Because I have seen people cheating in board exams and I know that is such a weird thing to see. Like I have always imagined board exams like आपका सबसे high level का exam जो आपको देना है, like till 10th वही mindset होता है. And I saw people cheating in that exam and when you go to tell teachers, they won't listen to you because वो सिर्फ उनके, I don't know, there are a lot of things but you should not go get into those. Just be chill and go give your exams, prepare well. and ये पूरे वीडियो का gist अगर मैं अभी 1 सेकेंड में दूँ, learn your NCERT, do NCERT, do whatever you can, but never leave your NCERT. किसी दूसरे रेफरेंस बुक के चक्कर में मत पढ़ना. NCERT की हर एक लाइन, एवरी सिंगल ड्राइंग, एंड इवन इन SST जो फिगर्स होते हैं ना, इमेजेस होते हैं कि ये क्या फेडरिक ज़ोरियो की पेंटिंग है, वो सब 10th में था ना, हाँ, वो सबको एकदम मतलब यू शुड नो ईच एंड एवरी थिंग. वो पिक्चर्स के भी पॉइंट्स वो पूछते हैं, लाइक दे हैव अ पिक्चर, वो बताएंगे कि ये किसका पिक्चर है बताओ. सो दोज आर लाइक बेसिक क्वेश्चंस, बट अगर आपने वो एक बार रीड नहीं किया है, यू वुड नॉट गेट इट इन एग्जाम्स, क्योंकि हिस्ट्री में जनरल नॉलेज नहीं चलता. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. एंड यार आई थिंक दोज वर ऑल द basic tips which I would like to give you guys for this video, and you can surely comment down your doubts and stuff so that I can make another video jahan pe I'll clear your actual doubts which you have related to your board exams. So yes, I guess I'll end this video right here. I hope you guys enjoyed it. If you did, don't forget to give it a big thumbs up, subscribe, turn on the post notification and comment down below what your favorite part in the video was. Till then, stay safe and keep watching. Bye.